बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉस्मोगोनिक मिथ्स। कॉस्मोगोनिक मिथ्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलें फ्रेंड्स, बढ़ते हैं सेशन की तरफ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्मोगोनिक मिथ्स। कॉस्मोगोनिक मिथ्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। The world as a structure of meaning and value has not appeared in the same manner to all human civilizations. जो दुनिया है वो वो स्ट्रक्चर और अपने मीनिंग के हिसाब से लोगों को उस तरह से नहीं मिलती जैसा कि सिविलाइजेशंस में पाया जाता है। There are therefore almost as many cosmogonic myths एज देयर आर ह्यूमन कल्चर्स। जितने ज़्यादा दुनिया में कल्चर्स हैं उतने ही ज़्यादा कॉस्मोगोनिक मिथ्स हैं। अनटिल क्वाइट रिसेंटली द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज मिथ्स ऑन एन एवोल्यूशनरी स्केल फ्रॉम the most dominant mode of ordering these myths. Recent 20th century scholars, however, have begun to look at the various types of myths in terms of the structures that they reveal rather than considering them on an evolutionary scale that extends from the so-called simple to complex. For in a sense, there are no simple myths regarding the beginning of the world. The beginning of the world is simultaneously the beginning of the human condition. ठीक है, ये जो बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड है इसको कहा जाता है बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन कंडीशन एंड इट्स इम्पॉसिबल टू स्पीक ऑफ दिस बिगिनिंग्स एज इट वर सिंपल। क्रिएशन बाय सुप्रीम बीइंग की तरफ से जो क्रिएशन हुई थी वो क्या है। 19th century scholars who look an evolutionary survey of the human culture and religion, for example Sir James George Freese and Sir Edward Burnett Tylor, held that the nation of the creation of the world by the supreme being occurred only in the honest stage of the cultural development. ये इन्होंने कहा था। इसके बाद जो है एंड्रयू लैंड have been proved and attested to over and over again by investigators of the numerous cultures. This belief has been found among the cultures of the Africa, the Ainu of the northern Japanese island, Amerindians, Seoul, Central Australian, are the parts of the globe. इसके बाद हमारे पास जो न्यू चीज़ है इन क्रिएशन मिथ्स ऑफ द अबव टाइप द क्रिएशन इट्स और द इंटेंट ऑफ द creator deity is to create a perfect world, that is paradise, before the end of the creative act or sometime soon after the end of the creation. The created order or the intent of the created deity is thwarted by some fault of one of the creatures. There is thus a rupture in the creation myth. An African myth from the Dogon people of the West Africa illustrates this point. In this myth, the creator deity first creates an egg. ठीक है, इसमें कहा गया है कि अंडा दुनिया में पहले आया है। विद इन द एग देयर आर टू पेयर्स ऑफ ट्विंस। दो ट्विंस आए हैं, ईच पेयर कंसिस्टिंग ऑफ वन मेल एंड वन फीमेल. These twins are supposed to mature within the egg, becoming at maturation androgynous, both male and female, begins the perfect creatures inhabit the earth. One of the twins breaks from the egg before maturation because he wishes to dominate the creation. In so doing, he carries out a part of egg with him, and from this he creates an imperfect world. The creator deity, seeing that he has done sacrificed the other twin to establish a balance in the world. The creation is sustained by his sacrifice, and it is now ambiguous instead of the perfect world intended by the God. So, creation through emergence
ठीक है. In contrast the creation by the supreme sky deity, there is another type of the creation myth in which the creation seems to emerge through its own inner power from under the earth. In this genre of myth, the created order emerges gradually in continuous stages. It is similar to birth of metamorphosis of the world from the embryonic stage of to maturity. Just as the supreme creator deity myth forms a homology to the sky, the emerges myths form a homology to the earth and to the childbearing woman. In many cases, the emergence of the created order is analogous to the growth of the child in the womb and its emission at the birth. तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के सेशन की डिटेल्स. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.